Yes, sir. Mohit, Yes, sir. Vishal, Vishal is not there. Okay. Harsh, Yes, sir. uh, Udit, Present, sir. Vajanti, Present, sir. Ravindra, Present, sir. Pratiksha, Present, sir. Arunav. Sir, Bhupendra, sir. Yes, sir. Okay, Bhupen. Bhupen, Arunav is there, right? Arunav Yes, just sir. speak. Sudeshna. Sudeshna is not there. Fine. Okay. Hello, sir Rishikesh sir. Why you are late today, Rishikesh? सर यहाँ पे सर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है सर. मैं एक्चुअली विलेज एरिया में रहता हूँ सर. सर तो ज्वाइन करने के लिए बाहर आना पड़ता है सर. तो क्लास का टाइम नहीं Same मालूम here, था, sir. ऐसा कुछ है? सॉरी सर, नेक्स्ट नहीं, टाइम से नहीं क्लास होगा का सर. आप पहले से जो आप एक्सक्यूज दे रहे हो, अगर आपको मालूम है तो यू कुड डू इट अर्लियर. यस सर. Fine. Okay. So, and everyone is again. I'm saying you be on time. Don't take too much of time. 10 का 10:01 तक ठीक है. मतलब आप 10:03, 10:04. You are taking so much of a time. Okay. Let's move to the our topic. Okay. Let me know when you can see the screen whiteboard. So we'll start. Is it visible to Yes, all? sir. Yes, sir. Fine. So last class में हमने we basically talked about your syllabus, and we discussed that to solve any problem, like when you're going, you need a mathematical model and the numerical analysis. Then if you have the analytical solution, it's fine, easy to solve, but they cannot be applied to all the cases, to the complex geometries, to the complex loading. And then you need the numerical methods, which are uh, maybe an approximate method, but you can get the solution to a good range of nearby solution, right? This is what we discussed. And then we were some terminology we are talking about ki FEM mein, what is FEM, we discussed about it, that basically we in FEM, anybody wants to speak up what we discussed in FEM last class? Yeah, anyone? Mohit, Yes, sir. what we talked about FEM last class में क्या कहा था हमने? Sir, it's a numerical method where solutions are approximate and सर हम क्या करते हैं कि इसमें दो प्रकार के होते हैं सर. एक तो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है और एक न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है. तो एफईएम जो होता है ना वो न्यूमेरिकल एनालिसिस न्यूमेरिकल मेथड्स पर बेस्ड होता है जिसमें सॉल्यूशंस जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट होते हैं. इसमें क्या होता है सर, जो भी जिस भी सिस्टम को हमें डिज़ाइन करना है वो एक डोमेन हो जाता है. उसको हम क्या है ना मैश में कन्वर्ट करते हैं. मैश में क्या होता है ना उसमें जो डोमेन होता है उसमें एक सब सब डोमेन होता है और जो जिस पॉइंट्स पर वो कनेक्टेड होते हैं उनको नोड्स कहते हैं हम. और सर नंबर ऑफ इसमें क्या होता है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो फाइनाइट होते हैं. तो जिसके कारण क्या होता है ना हमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं. Okay, so I hope he has.
जो भी अ, जो कल हमने डिस्कस किया था उसको उसने समराइज काफी हद तक कर लिया है, but he had and we discuss he has also told why finite element method is called finite element, because of you can have infinite number of discretized element for a domain, but uh, what we do, we cannot do that infinite number of subdomains, तो हम उनको किसी भी डोमेन को हम एक लिमिटेड या एक नंबर के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दे आर फाइनाइट इन नंबर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट एलिमेंट मेथड. So and you will get different definition in different books, right? It is, there is not a one single definition of FEM. You may get different definitions depending upon the interpretation. So let us move Sir, one ahead. question. So yeah, Sir, how yes, tell me. mathematical modeling is different from numerical method? Mathematical modeling in the sense that is dependent upon the physics of the problem. ये जो है FEM जो है वो उस फिजिक्स को सॉल्व करने का तरीका है, जिसमें हम जैसे किसी भी सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होती है, या तो आप डिराइव करोगे या फिर आपको उसकी सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है. लेट्स से for axial bar, right? Let's the vibration of the spring mass system की बात कर लेते हैं. So vibration of a spring mass system is, you know what it is, mx double dot plus kx is equal to f. If the it is forced vibration, it is like this, right? So this is the differential model, or rather I would say this is the mathematical model of that problem that has been developed. ये मैथमेटिकल मॉडल डेवलप हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम का when it is subjected to force vibration. अगर फ्री वाइब्रेशन रहेगा तो ये f of t is 0, right? अब Yes, sir. ये तो मैथमेटिकल मॉडल हो गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है. that means you want to find the x, like an equation solution for x at different time and different points. अभी तो खैर ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है तो आपके पास एक ही पॉइंट है, वो एक ही मास रहेगा, ठीक है, x एट डिफरेंट टाइम, ठीक है. तो एक तो तरीका हो कि मेरे पास डायरेक्ट x की एक एनालिटिकल इक्वेशन है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, यू हैव सम इक्वेशन, इफ इट इज फ्री टाइम वाइब्रेशन तो e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी एंड समथिंग समथिंग ऐसा रहता है ना, देयर इज सम इक्वेशन, राइट? So now this is the exact equation, exact solution. You have it, but when the structure is, मतलब अगर यही एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हो जाए, ये सिंपल फिनोमिना है, सिंपल प्रॉब्लम है स्प्रिंग मास सिस्टम का, तो आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है x, वेयर x बिकम्स योर फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? x इज योर फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ x वेरी होता जाएगा. अब ये एक अगर कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हो जाए जिसमें आपका लेट्स से यू हैव दिस एंड यू हैव लेट्स से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री ले लेते हैं, कोई भी रैंडम ज्योमेट्री, सो दैट नाउ लेट्स से देयर इज सम ज्योमेट्री लाइक दिस, कुछ भी रैंडम ले लिया मैंने, है ना, ये एक ज्योमेट्री है, ठीक है, and now and it is subjected to one force F1, F2 and multiple forces are there. Now what we want to do, and they are also not a static force, अभी हम क्योंकि डायनामिक का एग्जांपल देख रहे हैं, and you want to evaluate the response
for this point, for this point, for this point, for this point. Are you getting my point? मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ? Yes, sir. अब आपके पास इसका मैथमेटिकल मॉडल तो है, you have the partial differential equation, but it is not possible to get a single equation exact solution for the different points, और एक पॉइंट पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो वेरी हो रहा है, हर पॉइंट पे टाइम के साथ रिस्पॉन्स वेरी होगा, so you don't have exact solution. So in that case we know the mathematical model, but how we solve the mathematical model is a numerical method. ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा रहेगा वो न्यूमेरिकल मेथड है. एक तरीका है कि आपके पास एनालिटिकल इक्वेशन हो जो ये है x इक्वल टू जो मैंने दे दी, तो आप सॉल्व कर लोगे, बट हर केस में ऐसा नहीं होता. You cannot have the direct analytical equation for the problem. So then you go for, then it is better when the geometry is complex or the loading is complex, then we go for a numerical method such as FEM. Is it clear now? Yes, sir. Clear. Okay. So let me rub this. There is a lot of stuff which I hope ये बाद में कंफ्यूजन करेगा जब आप व्हाइट बोर्ड देखोगे. Okay. So FEM, I'll write a statement here. FEM, it's a numerical it is a numerical method what we have discussed to find approximate solution, right? To find approximate solution for मतलब for partial differential equations, और rather I would say जो अभी हम बात कर रहे थे कि मैथमेटिकल मॉडल होगा आपके पास फॉर, तो मैथमेटिकल मॉडल नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ही होता है. नाउ इन दिस मेथड व्हाट वी डू, वी convert this partial differential equation into set of algebraic equation. So I'll write that in this PDE. Partial differential equations are transformed into algebraic equations. And as I said, this is not the only definitions. This is one of the stuff that we have discussed. So I'm just writing it up. You may get different definitions in different book now. And as you know, the other point important here is that again we have discussed analysis of practical problems are complex, involve complicated domains, right? Domains, material, and boundary conditions. Abhi, you might have heard about the different materials that are being developed. I hope आपको पता होगा, अगर आपने नाम सुना होगा, जैसे कि फंक्शनली ग्रेडेड मटेरियल्स के आजकल बहुत डिस्कशंस होते हैं. ठीक है, functionally graded materials are there, then composites are there, then piezoelectric materials are there. These are the materials which does not have a simple properties. ठीक है, कि आप इसमें एक सिंपल मेथड से सॉल्व कर पाए. इनकी मटेरियल प्रॉपर्टी भी डायरेक्शन टू डायरेक्शन वैरी हो रही है. पीजो लाइक इफ यू गो फॉर FGM में आप FGM का अगर शार्प देते हैं तो the material inside core is different and the material on the surface is
let's say shaft की बात है तो material on the core is different, material on the surface is different. So then it's not easy that you can apply a simple equations what we have studied in mechanics of solid or and we get the solution. So so it is already known difficult to have the exact solution, difficult to get analytical solution. ठीक है, और तीसरा पॉइंट की न्यूमेरिकल मेथड जो होते हैं वो दे आर cost effective in the sense they take less time. या तो आप फिर कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करोगे, या तो फिर आप प्रोटोटाइप प्रोड्यूस करिए, मैन्युफैक्चर करिए, उसका टेस्ट करिए, और उसके बाद ही आप पता पड़ यानी यू विल बी एबल टू फाइंड सम results some conclusion, because if the analytical solution is not there, you can have other way around is to produce the component, do the experimental result, but again they are not cost effective. It takes a lot of time, it takes a lot of money. So numerical methods you have are the cost effective in nature. It takes less time, as well as you need to run a simulation, right? So so we have discussed about the basics like मैथमेटिकल मॉडल की हमने कुछ बात कर ली. तो नाउ थोड़ा सी एक शॉर्ट इन विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ FEM. दिस इज एनीवे नॉट ऑफ मच इंटरेस्ट, बट थोड़ा सी just for the sake of information. Now the discretization of domain is not only done in FEM. Okay, there are other methods also that discretize. So it is, और साथ साथ में कि ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बेसिकली मैथमेटिशियंस ने पहले मैथमेटिशियंस लाइक पैरामीटर ऑफ सर्कल वगैरह निकालने के लिए भी डिस्क्रिटाइजेशन कर सकते हैं. मतलब हम वो उस एग्जांपल को देखेंगे, FEM से समझने की कोशिश भी करेंगे. And there are other methods which also goes into discretization, right? The first person who talked about FEM was Rinkoff, H. Rinkoff, in 1941. This is all theory, right? So he introduced to elastic medium as a collection of bar and beams. Introduced basically framework. उसने framework की बात की थी. Then subdomain, or rather I would say piecewise continuous function was given by the person called Courant in 1943. So you can see how old is the FEM, but it is around 1940s में ही, मतलब 1940s के इसका FEM आना चालू, FEM की बात करना चालू हुई. And formally it was
named as formal जो है बाद में Turner was the person, he implemented this into Boeing. He was Boeing, I hope you would have heard it. Boeing का नाम सुना हुआ है? Airplanes. हाँ. So this company makes aircrafts, you know. Boeing and Airbus are the two big names. So Turner was the person in Boeing who used this for the aircraft industry. In that was around 1950s, 1950 and 1960. And the term FEM was given by the person Clog in 1960. And then you have lot of literature available in the web. There are a lot of journals that publish specifically the paper of FEM, and there are books, you know, books available. So this is a brief, let's say this is a brief history. और भी बहुत सारे होंगे बीच में कंट्रीब्यूटर होंगे. So I'm just introduced a brief history. आप बाकी if you are interested you can look into it. थोड़ी सी थ्योरी इंट्रो बता दी हमने, हिस्ट्री ऑफ एफईएम कैसे स्टार्ट हुआ था. Now what we'll do, we'll try to understand the concept, or rather I would say some aspects of FEM through a simple example. It may not cover all the aspects कि FEM कैसे काम कर, सारे steps नहीं covered होंगे, but some steps will be covered. So the example I'll take is approximation of circumference of circle. So this is the example we'll be talking about. Yeah. So let's move to this. I hope the things what has been covered till now is clear to you guys, right? Yes, sir. Okay, so let us have the circle and having radius r, and the problem is to determine circumference or perimeter, whatever we call, of this circle. So we'll try to understand how FEM works through this example. Now, so the first thing we do is the discretization of this domain, right? So when you use any software, ANSYS or Abacus or Nostrum or whatever may be, वो discretization को mesh कहते हैं. The term they use is mesh because वो mesh के जैसे दिखता है, तो उसको mesh कहते हैं. So what we do,
So first step is finite element discretization. So in this case, again, now let's say I'm taking the this segment, and so on. So I'm dividing this into, let's say, as of now, 6 elements और the 6 subdomains. ठीक है, एलिमेंट को हम सबडोमेन भी कह रहे हैं. टू डिटरमाइन द पैरामीटर, मैंने इसको स्ट्रेट लाइन के जैसे फिट कर लिया. स्ट्रेट लाइन के एक अब एंड this is R, this is, let's say, center, and this is angle theta, and the actual curve, that is SE. Let me give the name this point as A or B. So A और B के बीच में जो arc है वो SE है, and the straight line length between them is HE. Fine. HE is the line segment AB, and arc AB is given by SE. So this is how it is. So what I have done, I have discretized circle into n subdomains. Let's say there are n subdomains, and this, they are called elements. And the step we are calling as discretization. So now I'll move to the next step. Then once discretization is done, we'll go for elemental equation. Now what we do in this case, we just look into a single element. We are looking into a single element, that is AB here, which is a kind of straight line. So I have isolated that element, and its property are approximated. So I'm no. So what I'm doing now, let's say HE, that is the length of line segment AB, knowing the radius R, would be given by 2R sine of theta E by 2. So this is theta E. Okay. Theta E.
angle made by an element. So the length of AB would be given by 2r sine theta e by 2, right? r sine theta e by 2 will give half of AB, so उसको multiply कर दिया. So ये हमारी एक एलिमेंटल लेवल की इक्वेशन हमने डेवलप की कि भाई एक एलिमेंट की जो लेंथ है वो इतनी है. Now, so we move to the next step and what we do now, एक एलिमेंट के लिए कर लिया, so we do assembly of element equations. So this is the step ahead. So the approximate value of this circumference. Now we have talked about a single element. So let's say there are n number of element, n element है, तो सबकी लेंथ का एडिशन मैं कर लूं, तो I'll get an approximate value of circumference or the parameter of the circle. So assembly is basically that only, that it is the when you have the equation for one element, you are basically assembling it for the whole domain. So let me, for this example, we'll write okay, you guys are not on the Microsoft team. I could see only Aditya has the login. आप लोग नहीं है, आप लोगों को एक्सेस नहीं है या someone please. सर पर्सनल अकाउंट से है, इस कॉलेज आईडी से नहीं है. ओके, कॉलेज की आईडी से मेरे ख्याल से आप लोगों को होगा. आप जस्ट ट्राई इट आउट, क्योंकि क्या होता है कि उस केस में मैं ये व्हाइट बोर्ड डायरेक्ट आपसे शेयर कर सकता हूँ एंड यू कैन लुक इनटू दिस व्हाइट बोर्ड rather than me converting it to PDF and then sending it. You can look into this whiteboard directly, क्योंकि when I was trying to share it, I got only the आदित्य का ही मुझे दिखा जिससे मैं शेयर कर सकता था, बाकी किसी का मुझे आईडी दिखा नहीं. So I had shared with him. But Aditya, you would have got the mail regarding that, because other लोगों का नहीं था, तो I could not share it. And you will get, if you have that access to this Microsoft team, so you will get that link and you can directly open this whiteboard. Okay, so what I was saying, so now we have elemental level equations, so we can club that in a proper order so that assembly could be done. So here anyways it is simple. So I would say parameter is given by, with n means n element, is sum of all the elemental level line segments. So this is how we are approximating the value of parameter. And let us
consider that there are n elements of equal size, so that in that case theta e would be given by 2 pi by n, right? अगर सभी सेम होंगे एलिमेंट तो थीटा e would be given by 2 pi by n. So my pn would be, अब यहाँ पे सबका सम करना है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई भी हो जाएगा. सो n इंटू 2r, अब यहाँ पे साइन थीटा e बाय 2 था और थीटा e हो गया हमारा 2 पाई बाय n. So that would be 2r sine of pi by n. So this is my the approximate solution with n elements. Approximate solution for parameter with n elements. Right. Now what we'll do, the next step is we are just trying to understand how good is the convergence, or rather I would say how good is the solution, or how we can improve the solution. So we have we are talking about convergence. And error estimate. Now in this case, however, in this case we know the exact solution also. So we can compute the error. For, let's say, for a typical element, the error would be given by, error in an element would be given by SE minus HE, where SE is the exact length. अगर आपने, let me go to the figure that we draw, that SE is the exact arc between AB, and HE is the, you have approximated it with the X line, straight line. So error is basically SE minus HE mod of that, and where your SE would be given by arc into, sorry, arc is angle into radius, right? So R into theta E, arc is angle into radius, and your theta is again given by 2 pi by n, right? This is what it is. So I'll use it here. So I get this as, I can take r common, right? So 2 pi by n minus h is he was if you see he was 2r sin theta e by 2, और r हमने बाहर ले लिया है, so that will give me 2 sine of pi by n, right? Now this is for a single element, and let's say what would be the global error, means overall error, that would be again multiplying this by n. There, as there are n elements, तो सबका error आपको सारे elements का add करना पड़ेगा, so you multiply it with n,
So overall error that I'm saying E, capital E rather than वहां पे सबस्क्रिप्ट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबल हो गया, इज गिवन बाय यहां से हम 2 भी बाहर निकाल सकते हैं. सो यू विल गेट दिस एज 2r. नाउ when you multiply with n, so this will be only pi, and this would be given by n sine of pi by n. So this is the error. Now let's say, so this is the error we have. Now if n tends to infinity, n tends to infinity means आप बहुत सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं, it is almost n tend to infinity. Okay, before that, so this I can write as 2 pi r also, and n sine pi by n, which is nothing but Pn. If you see, solution. So this is 2 pi r minus p, and I can write, and this is the again exact solution 2 pi r for the whole domain. अब n tend to infinity हो जाता है तो, and let's say x, I'm introducing a variable x which is given by 1 by n. So in this case my Pn was 2r by x हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin of pi x. This is how it will convert. Pn would convert this way, or I can write this way also. So now error would be given by okay, yeah. Now if you see, as we are saying that limit n tend to infinity है, तो Pn is would be limit n tend to infinity and 2r sine of pi x by x. Okay, so what this turned out to be, sine pi x by x when you have n tend to infinity? Pi. So that becomes 2 pi r, right? Pn. So in that case, error would be 2 pi r minus 2 pi r, that is 0. ठीक है. सो एक ये तो सिर्फ एक समझाने की बात थी कि अगर आप इनफाइनाइट एलिमेंट लेते हैं तो योर एरर comes out to be 0. But that is not possible to have an infinite element. You can't do that. So what we have, we normally break down this into some finite element, and you will have some error definitely, because as we are saying, this is the approximate method, and how better we are able to fit. अभी अगर ये जैसे straight line की जगह हम let's say एक quadratic curve ले लेते, अभी हमने straight line fit लिया है A से B के पीछे. या someone mic is open, you can mute. So अगर ये straight line curve की जगह हम थोड़ा सी quadratic पे चले जाते और इसको quadratic fit से solve करते, तो फिर थोड़ा सी better result हो सकता था. We could have a better results. That depends. See, the reduction of error depends on the number of element as well as the approximate equation also. Approximate fit
ऑफ द कर्व ऑल्सो, वो जब हम आगे और डिस्कस करेंगे तो हम पढ़ेंगे। एक तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा के एरर को रिड्यूस कर सकते हो, द अदर वे इज टू हैव मोर बेटर फिट और द मोर नोट्स विच विल टॉक अबाउट। अच्छा, यहाँ पे ए और बी जो पॉइंट्स हैं दे आर नोट्स, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट these are the notes, these points are called notes, and AB is the element, right? Okay, so we basically covered some basic fundamental steps that an FEM has, but अभी और भी सब steps होते हैं, we'll be talking about it. So the first job was, I'll just walk over it, this example again, so that what we do in FEM first is you have the discretization of the domain into the elements, which is we called as step is called discretization, and the type of element depends upon the physics of the problem again. इस केस में जैसे ये स्ट्रेट लाइन था, ए बी में आपने स्ट्रेट लाइन एलिमेंट ले लिया, हम जब आगे FEM में पढ़ेंगे we'll talk about bar element, we'll talk about beam element, all those things. तो हर एलिमेंट मतलब किसको लेना है, वो जो जिस चीज को आप एनालाइज करने जा रहे हैं उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि विच काइंड ऑफ एलिमेंट वी शुड चूज, ठीक है। नाउ डिस्क्रिटाइजेशन इज डन, देन यू व्हाट यू डू फॉर here, like a single element, we have found out what could be the elemental level equation. So we have done that, like we were interested here in the length of that element, so we found that element length as some known parameters, and the known parameters was radius and the angle it subtends. So similarly you will have the known parameter as the, you might be given some material model would be there, the area would be there, geometry में area दिया होगा, length दिया होगा, these will be the known parameters. material properties, and maybe other information depending upon the problem again. So once we have the elemental equation, what we do, we combine. Now this is as you have done it for a single element, but you cannot solve the problem for a single element. You have to assemble it, club it for the whole domain. So we have club it for the whole of the domain, and how this assembly is done again depends upon the connectivity between the elements. की कनेक्टिविटी कैसी है, नोड टू नोड कनेक्टिविटी उनकी कैसी है, उस एलिमेंट टाइप पे वो डिसाइड होगा, बट इस केस में इट वाज सिंपल, सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिशन हो गया। एंड कन्वर्जेंस आप इसलिए निकाल पाए कि आपके पास एनालिटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल था, आपके पास ऑलरेडी एनालिटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल था, तो आप बता पाए कि भाई हाउ दिस एरर इज देयर, and we just try to speak up that if you have infinite element, the error tends out to be 0. Okay, so any question, anything that was not clear to you? Yeah, any question? सर ये HE कैसे आया था सर? क्या सर HE वाला जो था सर, 2 थीटा E by 2, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। देखो ये तो ऐसा है, देखो ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है, ये आपका R है, ये R है, और ये HE है, ठीक। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, ये कितना हो जाएगा, थीटा E by 2 होगा, तो yes, ये HE by 2, ये इसकी लेंथ निकाल ली आपने, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, ये क्या हो जाएगा, गॉट इट सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ भाई, सब क्लियर हो गया सबको? तो कम से कम उतना ही बता दो कि सर इट इज क्लियर, एटलीस्ट आई शुड बी क्लियर सर। यस सर, क्लियर। okay. So what we'll do,
we'll stop here today. Maybe we'll, in the next class we'll understand some more basic concepts before going into the uh, different method of solving the PDE. उसके पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स और बात करेंगे और थोड़े सी स्टेप्स को और समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं सॉफ्टवेयर में आपके कैसे स्टेप्स होते हैं ठीक है ओके देन थैंक यू Sir, ऑल आई होप यू माइट बी हैविंग हाँ बोलिए सर अटेंडेंस होगी सर? अटेंडेंस हो गई लेट आओगे तो यही होगा नहीं सर, लेट नहीं सर, वो हमारा मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ना, इसलिए। मोबाइल कनेक्ट नहीं होता तो व्हाई यू ट्राई एट 10 o'clock only you try 2 minutes before यस सर, वो साइन आउट हो जाती है। and who are those राहुल एक राहुल की आवाज आ रही है और विजय विशाल एक मिनट राहुल था और कौन एब्सेंट था विशाल सुदेश सतीन सिंह सर सभी आ गए सर विजय कौन सतीन सिंह सर विजय विजय सर सौरव का हो गया क्या? हाँ तुमने बोला था ना नहीं बोला था क्या तो एब्सेंट सर मैंने हैंड रेज करा था। मैं देखते भी जा रहा था फोन यहाँ पे साइड में हूँ एंड आई वाज लिस्टिंग सर ऋषिकेश विजय से अब बता रहा मैं आज तो मैं कर रहा हूँ दिस इज द लास्ट टाइम आई एम कंसीडरिंग अब अगली बार आपका 10-2 से लेट हुआ 10-2 इज द मैक्स टाइम उसके बाद आप आइए क्लास अटेंड करिए कोई दिक्कत नहीं है बट आई विल स्टार्ट द क्लास बाय 10-2 ओके सर ओके सर, Yes. थैंक fine I'll not wait for you guys anymore okay you, sir. thank you all okay